Hello guys, welcome back to today's video. As you can see the screen, this video is about wrong ATC investments made by me. So I actually made some blunder ATC investments in my life, and I still regret on that, but I cannot help it. And that is what I'm going to share you today. Okay, so that you do not make these mistakes. Me being a chartered accountant myself made such blunders, so I'm extremely sorry. But I don't want you guys to make the same thing. That's why I'm making this video. Okay, so without wasting time, let's just start. Before starting, we are a team, and our name is Audit Practically, and we make videos on audit. And again, we are also diversifying and trying to make some videos on investment so that you learn investment well, and it will help you in generating passive income and not active income. Always remember, investments are to generate passive income. uh, in the stock market or equities or mutual fund are to generate passive income and not active income. Okay, and with that, let's start. So what we'll be covering today, so the agenda is, first thing is that investment mistake which I made. Second will be the what is the correct investment which I should have done, and right now I'm doing that. And why and how, means why I'm saying it is a correct investment and how. Okay, तो हुआ क्या बेसिकली, if you all know, right, means when we हम लोग first, तो we are like in articleship period where we get a very minor stipend, and the first earning which we get is post qualification. Okay, and when we get a good package, the problem we face is that we have to do ATC investments, otherwise tax will be deducted. तो मेरे को भी करना था, and before that, so हाँ, so we have to do that, right? सो मुझे भी करना था. नाउ आई वाज इन अ डिलेमा कि वेयर टू इन्वेस्ट, ठीक है ना, कहाँ इन्वेस्ट करना है. सो सी, I am not talking about LIC. Okay, LIC is just an insurance. I do not call it as an investment. I do not mix investment and insurance together. Investment is something else, insurance is something else. So both are separate things. LIC should be used for investment. Second, then there are fixed deposits, and NSC and things like that. But the better return one is PPF, a risk-free one. Okay, so PPF has a more higher return than FDs. Okay, and the third one is ELSS, right? Equity linked saving. And there is NPS also. Okay, the NPS 50,000 के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है. So what I did, एफडीज वेफडीज तो नहीं करूंगा, ऑब्वियस सा बात है. मैंने क्या किया, पीपीएफ में इन्वेस्ट किया, ठीक है. बिकॉज आई एम फ्रॉम अ फैमिली, लाइक यू, आप लोग सबको पता होगा दैट वी आर मींस, if you are the first generation CA in your family, the other people do not understand finance. तो स्टॉक मार्केट और इक्विटी ये सब कुछ समझ में नहीं आता है, और ये सब कुछ समझ में नहीं आता है. एंड देन एवरीथिंग इज लाइक, अरे नहीं यार, ये सब तो गैम्बलिंग ही हो रहा है. आई डू नॉट अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द शेयर प्राइस. आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द prices go up. I do not understand why the prices go down. So I have no idea. So I feel that everything is happening is gambling. So I was like, I have to protect my capital. This is what I have understood. Like हमको अपना capital बचा के रखना. I do not want high returns. I am not a person who will be going for high risk is equal to high return. ठीक है. So I will go for PPF basically. कि मेरे को पीपीएफ करना है, सिंपल सा. आई विल गेट 8% रिटर्न. आई विल बी हैप्पी विद दैट, बिकॉज इन ईएलएसएस इफ आई गेट 15 16 17 18, आई डोंट नो, 20% रिटर्न मींस, आई डोंट नो, मतलब स्टेबिलिटी, इफ इट, मतलब मेरा कैपिटल ही इरोड हो गया तो, ऐसा हो गया तो दैट इज व्हाट, ठीक है ना. सो आई चोज पीपीएफ दैट टाइम. सो बट देन आई रियलाइज कि पीपीएफ में 8% अगर मुझे मिल रहा है सपोजिटली, तो वो मेरा पैसा कितना ग्रो कर जाएगा, और ईएलएसएस में अगर मैं रखता तो कितना ग्रो करता. सो इफ अगर मेरा पैसा, आपको एक रूल होगा, पता होगा, देयर इज अ रूल ऑफ 72. सो 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट. सो लाइक 72 डिवाइडेड बाय 8 इज 8 कम्स टू अराउंड 8, हाँ, 8 कम्स टू अराउंड 9 years. ओके, तो मैं 8 साल पकड़ के चल रहा हूँ कि 8 साल में मेरा पैसा डबल होता है, डबल्स योर मनी. ओके, 72 डिवाइडेड बाई 8. तो मैंने यहाँ पर वही किया है कि अगर 8 साल 8% इंटरेस्ट रेट में मैं 1,50,000 रुपीज जो मेरा एटीसी का इन्वेस्टमेंट वो रखता, तो वो 8वें साल में जाके तीन तीन हो जाएगा, और 16वें साल में जाके 16 हो जाएगा, और उसके बाद 24 years में 12 हो जाएगा. और वही पैसा अगर 15% के रेट से अगर ग्रो करता, तो वो 15% के रेट में 4 साल में जनरली अप्रोक्सीमेटली हम लोग एज्यूम करें कि पैसा ये हो जाता है, ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स होते हैं, ठीक है. सो डेढ़ 3 हो जाएगा, 3 8 6 हो जाएगा, 6 12 हो जाएगा, और 12 24 हो जाएगा.
and then it will go on, like by the age of by 24 it will become 96 lakh, and more 4 years if you wait, it will become 1.92 crores, okay, 192 lakhs. So this is what basically the sheer power of compounding is. So I was like, Are yaar, I made a very big blunder, because after 16 had I taken the risk of investing in ELSS, and I generally understand that it has a return of 15%. So after 16 years I will have got 24 lakh rupees, and here I will be getting 6 lakh rupees only. So this was the biggest blunder which I made. And the second most important thing, this ELS has a lock-in period of only 3 years. Supposedly, if my firm does, if my fund does not perform well, I can just withdraw it after 4 years. No, means basically after 3 years. Even if like मैं 1,50,000 दिया, supposedly it goes down also. The downside risk maybe it comes to 1.2 lakhs और 1 लाख. So at least 3 साल बाद तो मैं पैसा निकाल सकता हूँ. यहाँ पर तो 15 years के लिए लॉक इन हो जाता है, जो कि almost 16 years हो जाता है. 15 years is a say because of the year which you invest, that is not counted. Okay, so 16 years हो जाता है. But the thing is that I do not understand the market. हम लोग सबके साथ वही प्रॉब्लम होता है. वी फाइनेंस गाई, वी हैव रेड एवरीथिंग, ठीक है ना, हम लोग ने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हमें मतलब आई डोंट नो, we do not understand sometimes the stock market, we do not understand, okay, because we have not given that time, because we were always learning, we were completing our academics. हम लोग बोला academics पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद we'll do all these things, because right now we will not do without proper knowledge. We will not do. So the same thing happened with me. And then I realized that नहीं, मेरे को अब सीखना है. I need to understand things properly, systematically, and I need to understand what how does the stock market works, how does this funds work, ठीक है. So I realized कि ये जो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के डेट में, मींस इफ यू आस्क समवन ना कि अरे व्हाई यू आर बाइंग दिस स्टॉक, व्हाई व्हाट इज, तो पीपल मुझे लगता है कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा. अरे लगता है इसका प्राइस ऊपर जाएगा, तो लगता तो बहुत कुछ हो सकता है, बट कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी व्हाई. So I got the answer of why do stock prices go up, and why do stock prices go down, and that is what I'm going to share with you today. So the basic thing is that it is very simple, very simple. Supposedly आपने एक बिजनेस किया, supposedly you have your own business, ठीक है. आप इससे आज के डेट में साल में supposedly 10 लाख रुपीस कमाते हो, ठीक है ना. अब supposedly ये बिजनेस आपको अगर बेचना है, supposedly, so if you sell it today, how much you will be charging? Supposedly you will be charging 1 crore. I'm just taking a hypothetical number, ठीक है ना, hypothetical number. Now supposedly वही बिजनेस आप 5 साल बाद अब फिर आप ये बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, और ये बिजनेस 20 lakhs अर्न कर रहा है ईयर में. आप इससे मतलब नेट इनकम सपोजली मैं मान के चलो कि आप 20 lakhs कम अर्न कर रहे हो. अब क्या आप ये वाला बिजनेस को 1 crore रुपीज में बेच देंगे क्या? Will you sell this for 1 crore rupees? Obviously the answer is no, right? Because you were selling it in 1 crore rupees when you were getting a revenue of, when you are getting a net income of 10 lakh rupees. Now when you are getting a net income of 20 lakh rupees, you will obviously go for at least 2 crores minimum, or you might go for 3 also, or you might settle in 1.5, but you will not settle in 1 crore, right? The same thing happens with stock market as well. It's because the earnings improve, okay. This is the biggest learning. If you're a person, if you're a know nothing investor, do understand, it's the stock prices go up because the earnings of the company grow up. उसका revenue बढ़ता है, उसका sales बढ़ता है, उसका revenue बढ़ता है, उसका profit बढ़ता है, उसका profit बढ़ता है. इसीलिए हम लोग उसको, जब उसका 4 साल बाद और profit बढ़ेगा, इसीलिए उसका prices go up. So for an investor, it's the earnings which go up, and that's why the prices rise. So this is the first learning which I had to share with you today. So now you're convinced, right? And similarly earnings बढ़ता है तो cash flows भी बढ़ता है. So if you the cash flows बढ़ता है, इसीलिए prices again go up, okay. And the valuation, what is, how do you value a company? You value a company through DCF method, like discounted cash flow method. तो उसमें क्या करते हो, कैश फ्लोज को पुल करके प्रेजेंट वैल्यू में लाते हैं. सो फ्यूचर में जाके कैश फ्लोज बढ़ता है, तो फ्यूचर में जैसे ही कैश फ्लोज बढ़ता है तो अर्निंग्स भी बढ़ता है, मतलब प्राइसेस भी बढ़ता है. सो दिस इज द लॉजिक ऑफ why the prices increase. So this is the first thing which I wanted to tell you. Second thing being कि अच्छा अर्निंग्स तो बढ़ गया, बट
now we every company का earning नहीं बढ़ेगा, right? There will be some companies like Vodafone who will collapse. Okay, so we do not know, ठीक है ना, which companies earning will go up, which companies earnings will go down, because अभी हम लोग उतना ये नहीं है. So that's why mutual funds come into picture. Okay, they know much more and they try to invest whatever companies they understand that whose earnings will go up and earnings will go down. So and then there have multiple stocks, ठीक है. So multiple stocks रखने से वो डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो का रिस्क को कमा देते हैं. आपको याद होगा, मैं बहुत अच्छा चीज इसको यही होता है कि जब पढ़ते हैं तो आपको एसएफएम में पढ़ाया गया होगा जो डेल्टा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो में ये वाला कंसेप्ट, एक तो फॉर्मूला है वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस बाई n प्लस कोवेरियंस, वेरियंस माइनस कोवेरियंस बाई n प्लस कोवेरियंस, ऐसा करके. सो व्हेन यू इसमें एक सम कराया जाता है कि अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न सपोजिटली 10% है या 15% है और स्टैंडर्ड डेविएशन सब स्टॉक्स का 4% है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी सबसे ज्यादा हाई, मतलब इनफाइनाइट स्टॉक्स का सबसे ज्यादा कम होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो. एंड क्या शार्प रेशियो बोलते हैं, शार्प रेशियो इज द हाईएस्ट फॉर दैट. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट the mutual fund companies sorry, mutual fund companies invest in a lot of diversified stocks and through that it cancels the unsystematic risks, ठीक है ना. सो व्हाट प्रिवेल्स इज ओनली द सिस्टमैटिक रिस्क, जो कि मार्केट का उतार चढ़ाव से होता है. जैसे सिस्टमैटिक रिस्क के एग्जांपल है लाइक कोविड, like people just abnormally reacted and the market went down. Okay, there was no change all of a sudden. Yes, the earnings got reduced but not to a significant extent कि market 14,000 से 8,000 के levels में आ जाएगा, right? So this is the concept of systematic risk. You for by choosing different stocks in your portfolio, you try to cancel the unsystematic risk. कि अगर supposedly banking industry banking stocks नहीं बढ़ रहे, then you can go for then means automobile stocks can go, your metal stocks can go up, or FMCG stock will go up. So that is the essence of portfolio. So what I'm trying to say is that basically ki investments in stock market is not gambling. Okay, there is some logic and rationale behind them, and that's why so many big investors are investing in them. Okay, and you should also choose something like ELSS for your investing, because the prices will definitely go up, and the mutual fund managers do invest in equities which have a diversified portfolio, and the risk is minimum. Okay, if you invest for long run, the risk is minimum, and obviously the lock-in also low. But you have to invest for long run. You should not be like अरे अभी बढ़ना. You should not be bothered with the everyday ups and downs. Okay, now the question is, if I have convinced with you that ELSS is good, how do you choose a better ELSS fund? So for that, I will take you there. So you need to Google it. There is a site named valueresearchonline.com. If you can see my screen, valueresearchonline.com. So the site will come. You need to search here. Okay, like this is a Mire Asset Tax Saver Fund. Okay, so your direct plan. Sorry. This is a direct plan. Okay, always go for direct plan. Okay, there is no brokerage involved. You save the brokerage amount which is 0.5%. तो 0.5% हो सकता है, 0.1% हो सकता है. तो आप लोग तो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हो, अब 14% से 1 लाख रुपीस को ग्रो करके देख लेना, और 15% से ग्रो करके देख लेना 15 साल के लिए या 30 इयर्स के लिए, और देख लेना कि डिफरेंस क्या आता है, 1% का भी क्या डिफरेंस आता है. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज गो फॉर डायरेक्ट प्लान. So this is like a tax saver. So you need to search your tax saver fund. Okay, जैसे कि tax saver fund जैसे सर्च करते हैं, let's see. हाँ, so there is option coming like Axis long term, that is giving 4 star, then it is Mire, it is giving 5 star. तो you आप ऐसे जाके सर्च किए, ठीक है ना, you search that and then you go for the direct plan. ठीक है, मीन्स दिस विल गिव यू द अबाउट द पोर्टफोलियो, कैसा है इसका परफॉर्मेंस वो बताता है. ठीक है, सो यू गो डाउन एंड यहाँ पर फंड का पोर्टफोलियो के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, कि इसका 5 साल में रिटर्न ये बता रहा है कि 23.93% है. ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग 15 हियर, तो द रिटर्न इज 23.9%, बट ऑब्वियसली
past data does not guarantee future returns. Okay, so that you need to be sure on that. तो और S&P 500 का रिटर्न 18.26 है, मतलब टॉप 500 कंपनीज का रिटर्न 5 साल में 18.26% है. So this is a return which is showing, which I am finding it very healthy. ठीक है ना. और ऐसे रेटिंग में भी इसको 5 स्टार दिया जा रहा है. इट हैज अ गुड 5 ईयर रिटर्न, इट हैज अ लो एक्सपेंस रेशियो. तो जिस तरह डायरेक्ट प्लान का जो मैं 5% किया, वैसे ही एक्सपेंस रेशियोज भी होता है, ठीक है, ऑल फंड्स में. सो वो एक्सपेंस रेशियो भी आप देख लेना. The expense ratio should be minimum. Choose that kind of funds. Okay, so इसका expense ratio is very low and the asset is 10,000 crores. Okay, 10,000 crores का एसेट अंडर मैनेजमेंट है. सो इट इज मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी. बिकॉज अदर्स में आप देखो उससे बड़ा एक्सिस लॉन्ग टर्म है, और डीएसपी में भी 9,000 है, और आईडीएफसी बहुत छोटा है. ठीक है. सो दिस इज द वे यू कैन सी अबाउट द फंड्स डिटेल. एंड यहाँ पर नीचे में आपको कैसे टाइप के एसेट्स में वो इन्वेस्ट कर रहा है वो भी दिखेगा. जैसे एचडीएफसी के अब आए दिन हर जितना भी यूट्यूबर है वो तो एटलीस्ट इतना तो बोलता है कि यार एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करो या टीसीएस में इन्वेस्ट करो. एंड सी HDFC, TCS. So it is betting on financial stocks. It is betting on technology stocks and like TCS and everything. And metal stocks में कुछ है. And it is making a diversified portfolio. Okay. And this is the portfolio. So by this you can choose basically. Now what I will recommend is that अब एक फंड, अब जैसे कि आपको 1,50,000 इन्वेस्ट करना है तो आप एक फंड मत चूज करो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन. ओके, आज मेरा एसेट सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, tomorrow it might not. So what you do, you can go you can choose the second best like Axis long term also. तो आप डिवाइड कर लो, you make, तो और भी आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा. बट too much diversification is obviously not good, but in this case because you are relying on one mutual fund, you can obviously go for two mutual funds like Axis को भी आप चूज कर लो. यहाँ पर भी आपको Axis का सारा डिटेल्स मिल जाएगा. And you see some similar companies are there, like this is also Axis is also holding HDFC, TCS. Okay. And similarly there is Parag Parikh also. Parag Parikh का फंड ना अभी निकला है, ठीक है. सो एक्चुअली Parag Parikh is a very big Warren Buffett investor, means sorry, Warren Buffett डिसाइपल कह सकते हैं. मतलब ही इज अ वेरी बिग फॉलोअर ऑफ Warren Buffett and that's why I like him. ठीक है ना. उसका फंड अभी जस्ट निकला है. It is for the year it is showing good returns, but 1 year return is showing good, but there is no 5-year return or 3-year return because अभी इसका नहीं है. Expense ratio is a little on the higher side. Okay, and that's why it is unrated. अभी बहुत नया fund and the asset under management is also very low. ठीक है, right now. But what I feel is that कि ये firm because of the beliefs, the fundamentals of the thought process of the people who are running it, that's why I believe that means I am also investing in this tax saver fund also. So what I've done is that basically मेरा जो भी जितना भी अमाउंट है, जो जितना मुझे एटीसी में इन्वेस्ट करना है, मैंने ये 2-3 फंड्स में ऐसे करके इस बेसिस में चूज करके अब मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, rather than I'm choosing for PPF. Okay. Rather than choosing for PPF, and this is how I'm doing it. So this was my major communication. Let me see whether I am forgetting something. So so in correct investment, how to invest. So I told you that you can see, check the parameters. It is not a buying recommendation, as you know. सबको वो dialogue देते हैं. So let me also complete that. I means I am just, you do your own financial due diligence and then you invest. But this is what I wanted to share with you, that you can go for this kind of stocks and means invest like this. Otherwise mere tarah I still regret the first year salary which I earned and which will be giving me after 16 years. 1.5 लाख जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो 6 लाख रुपया देगा. So which could have been 24. ठीक है ना. Had I invested, had I used my mind properly. अच्छा हाँ, yes, I have few more things to say. ऑलवेज ओनली फर्स्ट आप देख लो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब कितना ही अमाउंट को इन्वेस्ट करना है टैक्स सेविंग के लिए. ठीक है. अगर सपोज 1,20,000 करने से ही हो जाएगा तो 1,20,000 ही करना. 1 लाख करने से हो जाएगा तो 1 लाख. डू नॉट अननेसेसरी invest in places where there is a lock-in involved. Okay, first thing. Second, lock-in involved. ELSS में मत करो. अच्छा, सो देयर माइट बी स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग, मतलब जो लोग को ये एटीसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो लोग कहाँ इन्वेस्ट करें अगर तो. सो फॉर अ नो नथिंग इन्वेस्टर ऑलवेज गो फॉर इंडेक्स फंड्स. आई पर्सनली इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ माय मनी इन इंडेक्स फंड्स. आई
इंडेक्स फंड्स आर वेरी सिंपल, जैसे कि आप किसी का भी कंपनीज का ले सकते हैं। इंडेक्स फंड्स इज बेसिकली निफ्टी 50 का जो टॉप 50 कंपनीज होता है, they are mutual funds which invest in the top 50 companies of India, ठीक है ना। एंड आई ऑल्सो डू दैट। सो अपार्ट फ्रॉम जितना मेरे को एलएसएस में करना है, एटीसी में करना, उतना ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ, बाकी मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स एंड a simplified return and everything, or if you want to understand more about investing and things like that, do mail me at auditpractically@gmail.com with the subject line investing, and then we will keep a session, a live session, and there we will be discussing about more about index funds. Okay, till then, I hope you enjoyed the video. Do please like, share, subscribe the channel so that we can, it gives us encouragement to make more such videos. And that's it. Thank you for the day. Thank you.